Hello and welcome to my channel. My family comes from a region in North India. It's located at foothills of the Himalayas. The life here is simple, the people simpler, and our food is very down to earth. The recipe that I am sharing today is a stuffed bread recipe. This is a traditional Garhwali breakfast recipe. The bread is stuffed with any of the pulses or beans available. I hope you would like this recipe. So let's begin. To begin with, I am taking 1 cup of black-eyed peas. You wash them and rinse them. Once we have washed and rinsed them, add some water to this and let these peas soak overnight, or at least for 4 hours. Once the soaking time is over, these peas would nicely puff up. See, this is how they look. We can now transfer these to a pressure cooker or an Instapot or even a pan. These need to boil till soft. In a pressure cooker, it takes approximately 10 minutes to cook these. Add some salt. Now let's pressure cook them for 10 minutes till the peas are soft. Now peas are done. This is a traditional stone that we use to grind our spices and pulses. I am taking 1 inch of ginger and 1 green chili. Add the boiled peas to this. We will use this traditional stone to grind our ginger, chili and the beans. Now this process may take few minutes. In the hills, they do not have the luxury of mixers or grinders. So most of the people, they use these traditional grinding equipment to grind their spices. So we have to grind these peas till they are nice and soft. We have to make sure that there is no water in these peas while we are grinding them. We want this mixture to be as dry as possible. So once my mixture is smooth, I will just put it in a clean bowl. Now I have my pea mixture here. I am adding 2 tablespoons of coriander leaves. Taste the salt and add more salt if needed. Add a small amount of asafoetida, 1 teaspoon of cumin powder, half teaspoon of mango powder. Now let's mix all this together. See, this is the consistency of this mixture. It is thick and will not mix very easily. Please do not add any water at this stage. We want this mixture to be as solid as possible. If you are new to my channel, a big hello. And if you are my subscriber, a warm welcome once again. I hope you like my recipe. If you do press the like button. And don't forget to subscribe. Don't forget to hit that bell icon button for all the notifications of new uploads. Now my pea mixture is ready. Let's knead the dough. I am taking 2 cups of whole wheat flour. To this, add half a teaspoon of salt and 1 small teaspoon of ghee or clarified butter. Now mix all this together. If you mix it at this stage, this bread becomes more flakier and softer. Now add half a cup of water. Most of the time, whenever we are kneading dough, the amount of water required is approximately 1/3 the amount of the flour. This holds true for all-purpose flour. For whole wheat flour, this amount of water is slightly more than 1/3. This depends on the amount of fiber present in the flour. So just keep adding water till you can bring the dough together. Do not add too much water at one go. You do not want a runny dough. I am kneading this dough for 1 minute. So if you are not in hurry, just knead the dough for a very short period and cover it
and let it rest for at least half an hour to 1 hour. The gluten will develop in this time and the dough becomes soft and silkier. I am now going to make a ball and cover it for 1 hour. See, this is how my dough looks now after 1 hour. It is nice and smooth and we can get our bread going. Take 1.5 inches of the dough . Make a round ball, flatten it, and now we'll roll it to at least 4-inch circle. Now lift this rolled bread in your palm. Add 2 tablespoons of dal mixture or pea mixture to this. The amount of mixture should at least be 1.5 times the size of the dough, if not more. And now start pulling this dough together, as I am showing you. And try and bring the edges together. Once the edges are close, just pinch them together to close and seal the dough. Now the mixture is not seen from anywhere. Gently flatten this bread with your palm, and now we can start rolling this bread. Do not use too much pressure at this time. If you use too much of pressure, some of our pea mixture will come out. So just roll it gently with light hand. Now the aim is to make at least 8 to 10 inches wide bread, and it is around 3 millimeters of thickness. Heat a pan or a griddle, and now I am going to put my rolled bread on this. This bread needs to cook on one side for around 40 seconds to 1 minute. In this time, there will be small bubbles on the surface of this bread. As soon as the bubbles appear, we can flip the bread over. See, this is how my bread looks after flipping. Don't worry, we will cook it further. Let it cook for another 1 minute on this side as well. Keep the heat to medium. Flip it over again. Now add little ghee or clarified butter and apply it gently and smoothly on this bread. As the bread cooks, it will start puffing up. Just flip it over after 30 seconds and apply ghee or butter on the other side as well. See how nicely puffed my bread looks. If the bread puffs up nicely and evenly, it shows that the mixture is nicely and evenly distributed inside. And the steam, of course, cooks this bread evenly. So flip once more and this bread is ready. Let me show you one more time how to roll this bread. Take 1.5 inches of the dough and start rolling it. We will make around 4-inch wide circle. Lift it in your palm. Add around 2 tablespoons of mixture. And now start pulling this dough together as I am showing you. As the edges come together, gently pinch the edges. Flatten this ball so that the mixture is nicely and evenly distributed inside. Apply some dry flour. We can now start rolling this bread. Do not apply too much pressure while rolling this bread. Now the aim is
to make at least 8 to 10 inches wide bread, and it is around 3 millimeters of thickness. This time I am cooking it on a traditional tawa or a traditional Indian griddle. Traditionally in Garhwali, when we make these chapatis or these stuffed rotis, we do not apply ghee or butter while we are cooking it. These are made without ghee or butter. It is topped later. Once the bubbles appear, let's flip it over. As earlier, let it cook for 40 seconds to 1 minute and we can flip again. Now I am using a small wooden presser to press this bread. This helps the bread to puff. See, the bread puffs up nicely and evenly. Keep flipping the bread every 30 seconds or so. So once we have these even brown spots on the bread is ready. Get these even grilled spots on our stuffed bread. Now this seems ready and you serve it with some fresh homemade butter. Let me show you how my bread looks from inside. Let me break this one. See, it's nicely puffed and it's evenly stuffed. This bread is served for breakfast and for brunch. Some days we do end up eating it for lunch as well. It's a perfect, wholesome meal in itself. I hope you'll enjoy this recipe. This is a traditional Garhwali recipe. If you like the recipe, if you like the video, do press the like button. Subscribe to the channel. And if you have any comments, do mention in the comment section below. So, until then. नमस्कार, म्यार चैनल में आप सभी को स्वागत है। म्यार नो डॉक्टर रेनू धसमाना चे और मैं पौड़ी भटे छो। मैं आजकल अपन गढ़वाला की कुछ विशेष व्यंजन आप सभी दगड़ शेयर करूँ छो। म्यार आज एक रेसिपी चे दादा की भूरी रोटी। हूँ तो आजकल बच्चा ब्रेड बटर वाला, पिज्ज़ा वाला, पास्ता वाला वेगिन, पर अपन खाने की बात ही कुछ और हूँ, वे एक मजा ही कुछ और चे। मिल स्वाची कि लेना आज मैं अपन गढ़वाले की रियां से एक रोटी बनाना सीखूं। तो आओ जल्दी शुरू करता छा। आज जो दाल हम लेना छा, ये थे लोबिया भी बुलदन, स्योंटा भी बुलदन और रियांस भी बुलदन। तो मैं 1 कप रियांस लेना छा। ये थे धो लिया और कम से कम 4 घंटा भिगे दिया। चार घंटा में ये बहुत बढ़िया भीग जाते, यूं तो ज़्यादा भिगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं ये थे प्रेशर कुकर में डालूँ छो। ये मैं थोड़ा पानी डाला और 1 चम्मच लून डाल दिया। अब ये थे हमन 10 मिनट प्रेशर कुकर में पकाना। 1 इंच अदरक ले लूला और 1 हरी मिर्चा। जो चरचुर बरबुर खांदेन वो ये में मिर्चा और लून और डाल सकते हैं। ये में हमन अपन उबली जो लोबिया चे वे थे राख देना और अब सिलोट में ये थे पीस लूला। अच्छा, दाल में ना पानी बिल्कुल नहीं चढ़ना, जो पानी रह गया तो रोटी अच्छी नहीं बननी। तो मठ कह रही कि ये दाल थे हम पीस लूला। उन तो आजकल सभी जगह पर मिक्सी वेगिन और बाकी मशीन वेगिन, पर ये जो दाल चे ये सिलोट की पीसी ज़्यादा अच्छी लगे। अच्छा, एक बात सच,
मैं ना आँख सर्जन छो तो मी थे सिलोट ज़्यादा चलाण नहीं आन, धीरे धीरे कैरी की पीस सकुद मैं। मेरी दाल जो पिसे गया आई ये थे मिले एक भांड में निकाल ली मैं फिर बुनू छो ये दाल में पानी नहीं हूँ चैनू नहीं तो रोटी अच्छी नहीं बनती। अच्छा ई दाल में अब हमन कुछ हैरू धनिया डालना, ये मैं थोड़ा हींग डालना, हींग से थोड़ा पाचन अचुए जान। 1 चम्मच भुनी जीरा पाउडर और आधा चम्मच अमचूर डालूँ छो। यूँ सब यूँ थोड़ा डाल के चमचन अच्छे से मिक्स कर लेना। आपक मर्जी से आप ये थे हाथन भी मिक्स कर सकना। मेरी दाल तैयार हो गया ही, अब आटू तैयार कर लेना। यदि आप हमारे वीडियो देखते हैं और उन्हें पसंद करते हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ वो बेल आइकन बटन ज़रूर दबाना ताकि जब भी मैं नया अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन झट से आ जाए। मैं 2 कप आटू लेना चाहूँ, ये मैं आधा चम्मच लून डाल दिया, 1 चम्मच घी भी डाल दूला। अब ये थे हाथन अच्छे से मिला दूला। अब ये महमन धीरे धीरे कर पानी डाल। जब 2 कप आटू लेना तो ये माँ करीब 1/3 पानी लगल। कभी कभी आटा में अगर चोकर ज़्यादा हुआ तो पानी ज़्यादा लगत। हम थे आटू मुलायम ही चढ़ू, बहुत टाइट नहीं चढ़ू। तो ये आटू थे कट्ठा कर लूला और एकदम ओल लूला। मैं ज़्यादातर क्या कर दूँ, आटा मिला के थोड़ा देर ढाके रख दें, ये से आटू अब ही थोड़ा देर में मुलायम हो जान तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े। देखो 1 घंटा में मेरा आटू बिल्कुल मुलायम हो गया ही। अब ये हम भूरी रोटी बनाना। मैं करीब 1.5 इंच आटे गोल लीणू छो, ये थे गोल बने कि हम करीब 4 इंच बेल लूला। अब ये मामिल 2 बड़ा चम्मच दालक मसट डाऊं। जब भी रोटी बनान कोशिश कर कि दालक मसटू कम से कम आटू चुले 1.5 नहीं थर 2 गुना हों चैणू, नहीं थरी रोटी खाण में अच्छी नहीं लगता। अब ये रोटी थे ऊनी भुन जन में आप थे दिखाणु छो। एक दां जब हमन ये थे बंद कैरियाल तो ये थे हाथन दबे दिया। अब ये थे हम थोड़ा चपटा कैर लूला, सूखी आटू लगौला और ये थे हल्का हाथन बेल दूला। अच्छा हम ना झपझपा रोटी बनाओला, बड़ी बड़ी रोटी बनाओला तो ये कम से कम 8 से 10 इंच बड़ी तो होनी चाहिए। ये रोटी थे बिल्दा एक ही ध्यान रखना, ज़्यादा जोर नहीं लगान, जो ज़्यादा जोर लगे तो दालक मसटो बहरे जान। अच्छा पहल जो रोटी बनाणु छो मैं वो आजकल बच्चों के हिसाब से चे। आजकल बच्चा जरा पराठों में गीज गई तो पहल तवा गरम कर लिया और ये रोटी थे तवा में रख दिया। 30 सेकंड बाद ये रोटी थे हम फिर पलट देना। अब कन पचन दो कि कबर रोटी पलटन, ये पर छोटा छोटा बुलबुला आ जाने, जनी बुलबुला आई ओनी हम ये रोटी थे पलट सकते हैं। फिर से करीब 1 मिनट में ये थे दोबारा पलट लूँगा। ये फरक जरा घी लगा लेना।
ये थे दोबारा पलटे की दूसरी तरफ भी घी लगे दी। देखो कितना बढ़िया फूल गया। हाँ, अब ये थे हमन दुई तरफ भटे अच्छी तरह से पका लिए। देखो ये रोटी तो बिल्कुल तैयार हुई है। अब एकदम हम पड़ी ट्रेडिशनल गढ़वाली रोटी भी बनौला। फिर से 1.5 इंच आटो लिया, ये गोल बना लिया। अब ये थे 4 इंच बेल लूला। ये माँ हमन खूब सारा दालक में सेट रखा, कंजूसी नहीं कर। अब ये थे अच्छे से बंद कर दिला, जन में आपसे दिखाना चाहूँ। एकदम जब हमन ये दाल भोयाल तो ये थे अब हल्का हथन जरा दबे दिला। सूखी आट लगे लेना। ये थे फिर हल्का हाथ से बेल लेना। ये रोटी थे तवा में डाल दिया। फिर 30 सेकंड में पलट लूला। दोबारा 30 सेकंड में फिर पलट लूला। अब ये रोटी थे हमन सेकंड च और दबाए दबाए की ये रोटी थे अच्छे से सेक लिया। रोटी फुन जरूर चेणी छा। हमारी दाल एक भरी रोटी तैयार हो गई। ये गरम रोटी में मक्खन रखा और गरम गरम खा लिया। ये रोटी थे तोड़ी दिखा दू छो। देखा ये एक मसटू सब जगह अच्छे से लग्यूं छे और रोटी तो बढ़िया फूली छे। ये रोटी नाश्ता में बहुत बढ़िया लगे। हैरू लूण हुआ और घी हुआ तो मजा आ जान। आज हमन रेयासक भरी रोटी बनाए। आप चाहो तो ये रोटियों में गैत या तोर दुई मदे कुछ भी भोर सकता। मीठे उम्मीद से कि आप ये वीडियो पसंद आल। जो पसंद आल तो जरूर लाइक कर और सब्सक्राइब भी कर और ऐतर भी भेजन। तो फिर मिलता छाऊँ।